Good evening, all the consumers present here. Hearty welcome to our 93rd program in a series which we started in 2011. So, how many years? 14 years plus. We have covered vast variety of subjects. So, we always, it's a real challenge for us to look for a new subject each time. But consumer issues are so vast, we are able to carry on. So Consumers India is like a dream come true. I thought, voluntary organizations, they depend a lot on support of Government of India and some other companies, some other private companies, etc., CSR funds. We thought that an organization which is called voluntary organization. So we thought that me and my team, we thought, though I worked with government for 37 long years and have distributed a lot of money to people, but we felt that after people receive money, they become managers of money. So we wanted to focus on activities and we wanted to experiment with volunteerism. And I'm very happy to say that we have completed 19 years now without a single penny from anyone. No sponsorship. No sponsorship, but of course we have very good collaborations. For example, this program is being run for so many years in collaboration with India Habitat Center. We have run a series in collaboration with, 2 series in collaboration with India International Center. We have run some programs in collaboration with other organizations. So collaboration, yes, but no sponsorship, no grants. And our programs and activities are increasing. So it's possible to manage without grants. And our major campaigns are unethical medical practices, affordable and safe medicine, consumer justice, misleading advertisements, junk food, fake, spurious, counterfeit, etc., etc., etc. Environmental issues. We run a very successful internship program. 47th batch is running right now, and over 200 studies have been carried out on vast variety of subjects. And in those studies, students, under the guidance of mentors, they try to demystify various consumer products and services. They try to reveal the inner truth, what is there. And, for example, in one of the recent studies, which was on natural, herbal, and organic claims in cosmetics, how true? We found that, so many shampoos and creams and hair dyes, they are being sold with this claim, 100% natural, chemical-free, organic, etc., etc. And they show pictorials of neem and amla and herbs, various kind of herbs. But as a matter of fact, natural components may be only 1%, maybe max 2%, 3%. The rest is, there's no difference at all. So while you may be motivated to buy something by the ads, inspired by the ads, inspired by the pictorials, green pictorials, but actually they are no different from other products. We started 2-3 years back, we started reality check visits to various consumer commissions in the country. And we, as per Consumer Protection Act, consumers are entitled to justice within 3 to 5 months, as far as possible. That word is there. But the reality that we found was
that in Uttar Pradesh, for example, State Consumer Commission, less than 1% cases are disposed within the time norms. In Haryana, 1.4% cases are disposed within time norms. State Consumer Commission in Arunachal Pradesh was non-functional for last 5 years. So this is the state of consumer justice. If you file a case in Consumer Commission, then Tariq pe Tariq. It's no better than any other court. We are all concerned about fake doctors, fake drugs, fake lab tests. We have, 12th pass performing kidney transplants. In last program, which was on cancer drugs, how affordable, we found everyone was alarmed that very expensive medicines, 1.5 lakh a shot, that was being sold at a discounted price of, let's say, instead of 1.5 lakh, 90,000 per shot, but it was totally fake. It just had maybe water or maybe some other cheaper stuff, which was for 50 rupees, 100 rupees. So instead of 1.5 lakh, they were charging 90,000 or 1 lakh, but they were selling fake medicine. And just imagine the plight of those patients. So I'm very happy to share that many of our campaigns are successful. We take part of the credit for the successful enactment of Consumer Protection Act 2019. And now we have Central Consumer Protection Authority, which is empowered to take suo motu action against unfair trade practices and misleading ads. It may not be as effective as we wish, but it is empowered to take action. So our programs of this kind, we derive a lot of wisdom from our expert panelists. You can see how experienced they are. And then the young people whom we associate with our internship program, so they add another dimension to our Consumers India. And as you can see, that's all voluntary involvement. So it's time to introduce our distinguished panelists. Professor Sriram Khanna. He's Senior Vice Chairman of Consumer Voice and former Professor, Head and Dean, Faculty of Commerce, Delhi School of Economics in Delhi University. So you can imagine a person with his background, he got involved with Consumer Voice, set up comparative testing, and now he's the only organization into comparative testing. And being an academic, he has authored several papers, several books, including a book on consumer affairs, which is a textbook for the newly introduced course in Delhi University on consumer protection. He has been visiting professor at Texas, one of the US universities, has held many, many important assignments, including being on the board of Consumers International. That's International Organization for Consumers with headquarters at London. So, and he is my guru in consumer protection. I have learned the nuances of consumer protection from him. Of course, we were both much younger at that time, 2003 to 6, when I was Joint Secretary in Ministry of Consumer Affairs. And he used to talk about things which were happening in America and Europe. So, and now, as per law, we are equal, though not in practice.
we have miles to go. So thank you, Professor Khanna, for being part of us. Amitaji, please welcome him with a prize-winning painting. We organize All India Painting Contests, and some of the prize-winning paintings we use for our guests. So this painting has been made by a child in Haldwani, in Uttarakhand. Professor Naresh Gupta, we started together in December 2011. He was there with us in the first program in the series, and he is with us in 93rd series. So that's the strength of our experts, collaborators, associates. So he is an alumnus of AIMS, New Delhi, with 4 decades of experience in clinical care, medical teaching, and training in India and abroad. He is president of Health Environment Foundation and recently retired as director professor, Maulana Azad Medical College. He is also chairperson of Hemophilia and Health Collective of North. He has successfully established new institutional facilities in hematology, etc. Hemophilia Care Center, established by him in Maulana Azad, was rated as best in the world. So, thank you for Dr. Naresh for being part of us, and please continue your involvement, your association. We can't manage without you. So, he is also recipient of prestigious Delhi State Award in Healthcare. Savitaji, please welcome him with a prize-winning painting, which has been made by a child in Jhansi, in Uttar Pradesh. So we have one more, though she refused to sit on the dais. We have Amita Gupta sitting there in, yeah. Why don't you come here, Amita, when we introduce you? She has 30 years of teaching and administrative experience, Masters in Child Development from Delhi University, and she is convener of youth activities with Consumers India. She will recite some poems from our inter-college contest on 2 related subjects. One is Wellness on My Plate, Poetry on My Mind, and the other one is Ishtaharon Ki Chamakti Duniya, Kitni Sachi, Kitni Jhoothi. So she will add a different poetic flavor to this program. So Shashi ji, please welcome her with a prize-winning painting. So we are also thankful to our volunteers. They're all interning with Consumers India summer batch, and they are helping us with various activities. Yeah, they're all volunteers here. Yeah. Then, yeah, so now let's hear our distinguished panelists and see how much wiser we become. I would request Professor Naresh Gupta to take care of this program now onwards. Over to you, Dr. Naresh. Thank you, Jayashree ji. It's my pleasure and it's my honor to be convening this 93rd program. I was thinking we'll just change the order a bit. We'll start with the rainbow color of poetry. Now that you mentioned. So maybe we can request Amita ji to recite some extracts from the prize-winning entries that they received from inter-college poetry contest on this subject,
Wellness on my plate, poetry on my mind. Let's welcome her. Good evening, everyone. So today's topic is health washing and greenwashing. These are extremely fancy terms, and today our esteemed panelist will explain the meaning of it. And but it simply means, literally, it means false information, misleading information, untruth, ya jhoot. And how it is propagated? Through clever use of words, visuals, sounds, creating fancy words and terminology. And we hope to go through this dense fog of alluring words and get to the heart of the matter through awareness, alertness, and through constantly updating our knowledge. So Consumers India, we held a poetry competition amongst different colleges of Delhi. And the first I'll be talking about इश्तहारों की दुनिया कितनी सच्ची कितनी झूठी. So this is a poem by Alok Suman from Motilal Nehru College. So please enjoy this poem because it tells us that even the youth is aware about all the misleading concepts. मैं जब भी आज का अखबार खोलता हूँ, मैं खबरों को हर कोनों में टटोलता हूँ. खबरों की जगह भरी सी लगती हैं, रंगों से तस्वीरें सनी सी लगती हैं. रंगीन कागज़, कलम, अखबारों की दुनिया, ये दुनिया है अब इश्तिहारों की दुनिया. यहाँ चिप्स पैकेट में मिलती हवा है, तबीयत को मिनटों में ठीक करती दवा है. पेप्सी और कोला का ऐसा कहर है, पीकर जीत आगे और पीछे ये डर है. शराबों की क्या बात बोलूं तुम्हें मैं, शराबी के जज्बात बोलूं तुम्हें मैं. सोडे के नाम से ये शराब बेचते हैं और गरीबों की अर्थी पे हथेली सेकते हैं. न सच्ची रही अब मक्कारों की दुनिया, ये दुनिया है अब इश्तिहारों की दुनिया. नई क्रीम आई है तुम भी लगा लो, चमकती त्वचा सा निखार पालो. नहाना जो भूलो तो परफ्यूम लगा लो. जो दिल और दिमाग एक जगह पे ना हो तो मेंटोस खा लो, दिमाग की बत्ती जला लो. बालों की सफ़ेदी जो बुढ़ापा ले आए, तुम गोदरेज लाओ, काटो, खोलो और लगा लो. जो जीते हो तुम है नज़ारों की दुनिया, ये दुनिया है अब इश्तिहारों की दुनिया. I'll move to the next poem. ये जो poem है ये सोनाली नेगी की लिखी हुई है and it is she's from PGDAV College, morning shift. Paste the posters and let them roll the minds of people over unattainable goals. The desire to become Silicon Barbie doll, over the magazine covers, they'll make you a call to attract to a vicious trap, to an artificial world of makeup and fake glows. Fancy taglines and colorful boards. Hey, the advertisements are here to get your problems solved. Some black magic mantra or some Baba will decide sex-related samasya ke samadhan and gender of unborn child. Boost memory in 15 days. Now forget the natural growth. Get slimmer and toned cause you are imperfect with your muscles and bones. Get taller cause you can't reach your aims with that height. Dear ladies and gents, you are imperfect mankind. जो दिखता है वही बिकता है, as you say, pointing to them. Posters are fed with huge money to extract from your pockets the same. We know detergents are always Surf Excel. Dishwash bars are always Vim Bar. Toothpaste are always Colgate. Hence, we are always adversely, advertisingly lachar. So guys, pick up the glasses of common sense and analyze the rhetoric promotions. Let's stick to just awareness.
and not get flattered. Let both parties beware of the trust they must build, be it politics or economic purpose. Advertisements be always informatively built. एक और मैं एक सुनाती हूँ हिंदी की. आओ तुम्हें बताता हूँ इश्तिहारों की कहानी उनकी ज़ुबानी. ये लिखी है डैनिश अमीर ने, ये भी PGDAV के कॉलेज के हैं. आओ बताता हूँ तुम्हें इश्तिहारों की कहानी उनकी ज़ुबानी. खुद एक दूसरे को झूठा बताते हैं, एक दूसरे के राज खुद ही खोल जाते हैं. कोई कहता है ये परफ्यूम लगा लो तो स्टड बन जाओगे. कोई कहता है क्रीम लगा लो तो शाहरुख खान बन जाओगे. कोई कहता है साबुन से नहाओगे तो जर्म से मुक्त हो जाओगे. कोई कहता है ये बर्गर खा लो तो भूख से जीत जाओगे. कोई कहता है ये पेंट कराओगे तो राजा कहलाओगे. कोई कहता है ये कार चलाओगे तो शान वाले कहलाओगे. कभी कभी पानी दिखाकर शराब का इश्तिहार दिखाते हैं, और तो और ये श्रद्धा का भी व्यापार बनाते हैं. और भी ना जाने कितने झूठे इश्तिहार दिखाते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं, झूठे वादे कर जाते हैं. ये हमको हमारी ही नज़रों में गिराते हैं, उसके बाद भी खुद को अच्छा बताते हैं. कहता हूँ सुनो इनकी बातों में ना आना, कुछ सोच समझ कर ही चीज़ों को अपनाना. स्टे स्मार्ट, स्टे सतर्क. पोइट्री वो जंक फूड वाली. थैंक यू फॉर योर पेशेंस. So that was really that was really colorful, enlightening, with a lot of range, and the thinking of the young generation. These are all by the college students. Very, very inciting. But I think the topic that has been chosen today by Dr. Jayashree, greenwashing, health washing. I don't know how many of you had. I don't know how many of you had heard this term earlier. I actually had not heard it some months earlier when we were planning this program. So we would have some statements being made by the panelists here, and then we'll open it for the audience. So the first one we'll have is naturally Professor Shriram Khanna. You heard about him, and I think he's the right person to open the topic. Sir, up to you. डॉक्टर गुप्ता, जयश्री जी और मेरे दोस्तों, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, आज का जो टॉपिक है, मैंने स्लाइड अंग्रेजी में बनाई है, बोलूँगा हिंदी में, सबको समझ आ जानी चाहिए. हेल्थ वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग. हेल्थ वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग का मतलब क्या है? जब आपको किसी से कुछ लेना होता है, कुछ भी लेना होता है, तो आप उसको ह्यूमर करते हो, उसकी खुशामद करते हो, उसकी चापलूसी करते हो, उसको खुश रखते हो. ये तो ह्यूमन रिलेशंस में है. परंतु व्यापार के क्षेत्र में ये होता है कि आप जब बेचने वाले हो और अपना माल या सर्विस बेच रहे हो, तो आप अपने माल की इतनी बड़ाई करते हो जिससे कि दूसरे को लगता है कि इससे बढ़िया तो कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, और यही ले लो और अभी ले लो. अच्छा,
मैं सोचता था कि IIM के जो लड़के निकलते हैं उनको 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए की स्टार्टिंग सैलरी क्यों मिलती है? मुझे ये समझ में आया कि भाई उनको इन लड़कों की अकल इसलिए चाहिए कि उन्होंने ये स्कीमें बनानी हैं कि कैसे खान साहब का जेब में से पैसा हमारी जेब में आए, क्या क्या मार्केटिंग करें, क्या एडवर्टाइजिंग करें, क्या डिस्ट्रीब्यूशन करें, कौन सी कहानी बनाएं। ये सारे काम करने के लिए उनको ऐसे अक्लमंद लोग चाहिए जो उनको आपका पैसा अपनी जेब में डालने के लिए फैसिलिटेट करें। तो ये हेल्थ वॉशिंग और ग्रीन वॉशिंग, ये दो शब्द हैं, ये लेबल हैं कि जब आपके हेल्थ ऑफ व्यू के, आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ें की बढ़ाई चढ़ाई की जाती है तो वो हेल्थ वॉशिंग हो गया। अच्छा, इसमें केवल फिजिकल हेल्थ नहीं है, इसमें फाइनेंशियल हेल्थ भी है। आजकल आप देख रहे होंगे टीवी पे, मैं बहुत देख रहा हूँ कि आप काहे को म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो, आप फिक्स डिपॉजिट में डालो, 12%, 15% हर महीने मिलेगा आपको। मिलेगा तो सही, पर कितने महीने मिलेगा, और क्या आपको पैसा वापस आएगा भी नहीं आएगा, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो जो आपको अच्छा लगे वो कह के और आपसे पैसा वो लेना चाहते हैं। और ग्रीन वॉशिंग आती है इको फ्रेंडलीनेस से कि हमें अपने समाज को एनवायरमेंटली फ्रेंडली तरीके से चलाना चाहिए ताकि जो नेचुरल चीज़ों का उत्पादन हो और जिन चीज़ों के बनाने में एनवायरनमेंट को नुकसान हो उनको अवॉइड करें ताकि एनवायरनमेंट का डैमेज मिनिमाइज किया जा सके। और इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए उसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। चलिए आगे चलते हैं। पर ये कर क्यों रहा है? ये इसलिए कर रहा है, इसका रूट कॉज क्या है? इसका रूट कॉज है ग्रीड, कॉर्पोरेट ग्रीड, और हिंदी में कहें तो लालच। किस चीज का लालच? वाहवाही बटोरने के लिए नहीं, पैसे बटोरने के लिए। और ये जब ह्यूमन बीइंग का लालच ऑर्गेनाइज हो जाता है और हजारों करोड़ों की कंपनियां बन जाती हैं, सैकड़ों लोग उसमें एम्प्लॉय हो जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, तो ये सिस्टम ऑर्गेनाइज हो जाता है। जिस तरह एक आर्मी डिफेंड करती है अपने बॉर्डर पे, उस तरह ये कॉरपोरेट स्ट्रक्चर डिफेंड करती है अपने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को। और ऊपर जो लोग बैठे हैं वो सेवा करने के लिए नहीं बैठे हैं, वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उनको लालच है। अच्छा, मान लो उनमें 2-4 ऐसे लोग हैं जिनको लालच नहीं भी है, तो वो नहीं रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। उस स्ट्रक्चर के बारे में मैं बताऊंगा आपको। So when there is greed, people at the top want to maximize profits by enhancing sales by hook or by crook. चाहे झूठ बोलें, चाहे चकारी करें, चाहे बेईमानी करें, पैसा कमा के लाओ। नेक्स्ट, ये क्यों कॉर्पोरेट ग्रीड क्यों ड्राइव हो रही है? व्हाई इज इट ओवरटेकिंग? एक तो स्ट्रक्चर की बात है। बिजनेस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि शेयर होल्डर से पैसा लेते हैं कि तुम्हें ज़्यादा कमा के देंगे, रिटर्न्स, डिविडेंड, एप्रिसिएशन, और जिस कंपनी का क्वार्टरली प्रॉफिट बढ़ेगा उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, शेयर वाले खरीदने वालों को फ़ायदा होगा, जो मालिक बैठे हुए हैं उसके प्रमोटर्स, उनको फ़ायदा होगा। तो उनके जो नुमाइंदे हैं बोर्ड में बैठे हुए, उनकी स्ट्रक्चर ही ऐसे बन गई है कि वो सोचते हैं रुपयों के बारे में और कुछ सोचते नहीं हैं। आप अपने घर के बारे में सोचते हैं, आप अपने पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, हेल्थ के बारे में, वो सिर्फ पैसों के बारे में सोचते हैं कि इस क्वार्टर में हमें कितनी सेल दिखानी है। और जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर्स, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, कोर टीम्स, सेल्समैन, वो सारी स्ट्रक्चर एक आर्मी है जो कि कॉर्पोरेट ग्रीड के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही है। अच्छा, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ज़्यादा नंबर चाहिए तो वो मैनेजमेंट को पूछ करते हैं, तुम ये क्यों नहीं कर रहे, तुम ये क्यों नहीं कर रहे। वो कहते हैं जी बॉस कह रहे तो करना पड़ेगा, फिर वो अपने तरीके निकालते हैं। अच्छा, वो तरीके कैसे निकालते हैं कि जो उनके नीचे होते हैं उनको बोलते हैं भाई तुम इतना, तुम्हारा टारगेट है, इतना लाओगे तुम्हें इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो जो आदमी जिसको तनख्वाह मिल रही है वो इंसेंटिव कमाने के लिए जो वो कह रहे हैं वो करता है, उसमें झूठ भी बोलता है, बेईमानी भी करता है। अच्छा, कई बार तो छुप जाती है ये, क्योंकि जो चालाक लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा चालाक हैं, वो छुपा के करते हैं बेईमानी ताकि किसी को पता न लग जाए।
परंतु पता लग जाती है। अब मेरे एक कोलीग है प्रोफेसर विकास त्रिवेदी, वो निर्मा स्कूल ऑफ लॉ में अहमदाबाद में प्रोफेसर है। तो उसने सर्वे किया एक कंज्यूमर कोर्ट्स का गुजरात में। उसको ये पता लगा कि गुजरात के कंज्यूमर कोर्ट्स में 90% केस जो चल रहे हैं झगड़े, वो इंश्योरेंस के हैं, या लाइफ इंश्योरेंस या जनरल इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेचने में सबसे ज़्यादा कमीशन मिलता है। अगर उसका पहला प्रीमियम 10,000 रुपये का है तो 4,000 रुपया पॉलिसी बेचने वाला पॉकेट कर लेता है उसमें। दे आर फ्रंट लोडेड, तो एवरीबडी इज ट्राइंग टू सेल। तो जब ये कॉर्पोरेट ग्रीड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर से होती हुई इंश्योरेंस एजेंट के पास पहुंचती है, तो वो आपके घर पे आके आपको वो बातें बोल देता है जो एक्चुअली ट्रू नहीं है, और एंड यू हैव नो मीन्स टू वेरीफाई नॉर्मली। और जब आपको पॉलिसी से पैसे लेने की जरूरत होती है तो कहते हैं ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं पॉलिसी में, आप पढ़ लो। अच्छा, मजे की बात यह है कि जो वो बातें ओरली बोली जाती हैं, अखबारों में बोली जाती हैं, एड्स में डाल दिया, उनको बड़े क्लेवरली कॉन्ट्रैक्ट्स में भी वही डाल देते हैं। आपको पढ़ने से समझ नहीं आएगा इसका क्या मतलब है, परंतु जब आप पैसे लेने जाओगे तो वो बताएंगे जी इसका तो ये मतलब है, ये तो नहीं देंगे आपको हम पैसा। तो झगड़ा हो जाता है और कचहरी में चले जाते हैं मामले। अच्छा, चौथा है, कई बार ये होता है कि कॉर्पोरेट ग्रीड अकेली नहीं होती। मार्केट में कट थ्रोट जब कंपटीशन होता है तो एक कंपनी अपनी सर्वाइवल के लिए वो मजबूर हो जाती है सब करने के लिए, ताकि उसको सेल चाहिए। सेल नहीं होगी तो लॉस होगा, लॉस होगा तो दुकान बंद हो जाएगी उसकी। ये एक स्ट्रक्चर हमारी मार्केट सिस्टम का बना हुआ है। इसमें कुछ ही एक्सेप्शन है। अच्छा, एक एक्सेप्शन का नाम मैं लेना चाहता हूँ। मुझे हिंदुस्तान में कोई ऐसी कॉर्पोरेट ग्रुप नहीं मिला जहां ये कॉर्पोरेट ग्रीड ओवर पावर नहीं कर रही हो। एक मिला, वो है टाटा का। वो क्यों है? क्योंकि टाटा सन्स की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग टाटा ट्रस्ट के पास है, और टाटा ट्रस्ट का काम चैरिटेबल है। वो सारा पैसा अपना चैरिटी में लगाते हैं। और कोई हिंदुस्तान में आपको कंपनी मिल जाए जिसका प्रॉफिट चैरिटी में लगता हो तो मुझे बता देना आप। मुझे तो नहीं मिली आज तक। बिल गेट्स कहता है मैंने इतने करोड़ रुपए दे दिए, रॉकफेलर ने दे दिए, पर अमेरिका में आपको कोई ऐसी कंपनी नहीं मिलेगी जिसके प्रॉफिट केवल चैरिटी में जाएंगे, सिवाय हिंदुस्तान की टाटा सन्स के। और उनकी जो पर्सनल पॉलिसी ये है कि अगर उनका एम्प्लॉय बेईमानी करते हुए पकड़ा जाए तो उसी दिन छुट्टी हो जाती है उसकी, सेम डे। यहाँ इंक्वायरी वगैरह बाद में होती रहेगी, आप भी तो घर जाओ, आपकी जरूरत नहीं है। एंड यू फाइंड आउट, अगर आपकी पर्सनल नॉलेज है आप पता कर लो, टाटा के किसी कंपनी में, सभी कंपनीज में ये पर्सनल पॉलिसी ऑपरेट करती है। तो ये जो कॉर्पोरेट ग्रीड के जो एक्सेप्शंस हैं, दीज आर फ्यू एंड फार इन बिटवीन। और ये आप ये समझ लीजिए आपके देश के अमूल्य रत्न हैं। ये रेयर डायमंड्स हैं, आपको नहीं मिलेंगे किसी भी देश में टाटा सन्स जैसे। क्यों? क्योंकि वो पैसा जो कमा रहे हैं वो अपने लिए नहीं कमा रहे, वो समाज को दे रहे हैं सारा का सारा। और अगर किसी को शक हो तो पता कर लेना कि टाटा ट्रस्ट जितने भी हैं, एक नहीं है कई सारे हैं, वो कैसे अपना जो उनको डिविडेंड आता है टाटा सन्स से, और टाटा के सन्स इज द होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल द टाटा कंपनीज, जो प्रॉफिट आता है उनको वो सारा वो टाटा, उनका शेयर जितना है वो टाटा ट्रस्ट को। कैसे चलता है सर? हाँ जी, लाइवलीहुड कैसे चलता है उनका? मेरा नहीं, उनका टाटा का। वो टाटा, अरे वो बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद एम्प्लॉय, प्रॉफिट वो होता है जो एम्प्लॉयज की तनख्वाह देने के बाद बचता है। तो लाइवलीहुड तो चल ही रहा है, डायरेक्टर्स को तनख्वाह मिलती है, एम्प्लॉयज को तनख्वाह मिलती है, सबको मिलती है। परंतु ये अंधी अच्छी तनख्वाह मिलती है। नहीं, सबसे बढ़िया तनख्वाह देते हैं टाटा वाले। आप अगर टाटा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में एग्रूट हो जाएं तो आपका जिस तरह आईएएस में करियर बनता है उस तरह टाटा में करियर बन जाता है। सारी उम्र वहीं काम करोगे, आज इस कंपनी में, कल उस कंपनी में। तो ये वास्तविकता है और हमें पता होना चाहिए, आज से नहीं है, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उससे पहले से चल रहा है। सो लेट मी ऑल्सो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ग्रीड है समाज में छाई हुई, उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं और उनको हमेशा हमें प्रणाम करना चाहिए। अच्छा, अब ये जब एक बार तय हो गया बोर्ड में कि हमें माल बेचना है, तो फिर इश्तहार के थ्रू, सेल्स लिटरेचर के थ्रू, ओरल क्लेम्स के थ्रू और कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू, अब जितने झगड़े हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में इंश्योरेंस के, आप देख लो,
सभी झगड़े कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज पर हैं। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम कि जी आपको बीमारी थी, आपने हमें बताया नहीं, ये लाइन लिखी हुई है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की। 101 आपको एग्जाम्पल वो दे देंगे इंश्योरेंस वाले। ये बैठे हुए हैं, अभी हमारे मित्र गए हैं, सुभाष तिवारी, ये हमारे वॉइस के, कंज्यूमर वॉइस के बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस के डेस्क को देखते हैं। 20 वो एग्जाम्पल दे देंगे आपको कि कैसे इंश्योरेंस कंपनी ने आपके क्लेम को ठुकरा दिया उस कॉन्ट्रैक्ट की लैंग्वेज को देख के। जब आपने साइन किया आपने पढ़ा ही नहीं, उन्होंने ऐसे बनाए होते हैं कि भाई लगता अच्छा है, ठीक है भाई कर दो, चलिए। तो ये जो क्लेम किए जाते हैं फॉल्स क्लेम, ये एक ट्रैप बना देते हैं आपके लिए। हेल्थ वॉशिंग पे टॉल क्लेम्स हैं फूड और न्यूट्रिशन की वैल्यू के ऊपर कि भाई आपकी सेहत बनी रहेगी, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। कॉस्मेटिक्स और ग्रूमिंग के लिए ये आपको सुंदर बनाएंगे, त्वचा निखारेंगे, बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, ये डिसइंफेक्ट करेगा, ये इम्यूनिटी आपकी बॉडी की बूस्ट कर देगा। फिर फाइनेंशियल हेल्थ और वेलबींग के लिए कि इससे तो आपकी फाइनेंशियल वेलबींग होगी, पता लगा जितना पैसा लगाया था वो भी उससे भी महरूम हो गए। फिर एनवायरमेंटल के लिए टॉल क्लेम्स करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडलीनेस, इको फ्रेंडलीनेस, नेचुरल, इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल। ये इस तरह के क्लेम्स दे आर मेड विदाउट सब्सटेंशिएशन। ये चीजें हम ग्रीन वॉशिंग और हेल्थ वॉशिंग की कैटेगरी में डालते हैं। और ये ट्रैप किस लिए सेट किया जा रहा है? इसलिए सेट किया जा रहा है कि 10 रुपए की जो चीज है वो आपको 15 रुपए में बेच सके। So you are being trapped not by criminals, not by fraudsters, but by the brands we trust using the very language designed to make us feel safe. तो इसमें ज़्यादातर जो क्लेम्स हैं उससे हमें नुकसान होता है बिकॉज वी हैव मेड टू पे मोर मनी फॉर दोज प्रोडक्ट्स। एक नॉर्मल प्रोडक्ट के ऊपर प्रीमियम लेने के लिए ये सब क्लेम्स किए जाते हैं। 10 से भी 25% आप ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट दे दोगे टू बाई दैट प्रोडक्ट। And these are unsubstantiated, unverified claims. ऑर्डिनरी सोप 40 रुपए का, त्वचा को निखारने वाला सोप 150 रुपए का। हाँ, ये बात मानता हूं मैं कि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है, पर हमने जो कंज्यूमर वॉइस ने इस समय अब तक 250 से 300 डिफरेंट कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया है पिछले 25 साल में, और एक कैटेगरी में 10 से 12 ब्रांड हम टेस्ट करते हैं लेबोरेटरीज में। जब हम टेस्ट करते हैं तो हमें उसके हर इंग्रेडिएंट के बारे में पता लग जाता है। ये मैंने देखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो क्लेम करते हैं उनके अंदर इंग्रेडिएंट भी महंगे हैं, परंतु अगर इंग्रेडिएंट की कॉस्ट 10% ज़्यादा है तो प्राइस उनका 70% ज़्यादा है, डिसप्रोपोर्शनेट। तो ये उनको एक मौका मिल जाता है ज़्यादा पैसे ऐंठने का। तो इतनी कॉस्ट नहीं है जितना वो ऐंठ रहे हैं आपसे, परंतु उनको मौका लगेगा तो आपसे निकाल लेंगे। मुझे आज तक हिंदुस्तान में कोई व्यापारी नहीं मिला जो कहे जी मुझे कम पैसे दे दो। सब कहते हैं मुझे ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा लेने की कोशिश करते हैं। आपको मिला है तो मुझे बता देना आप। अच्छा, हेल्थ वॉशिंग में तो प्राइमरी टारगेट मदर्स हैं। सेफ फॉर योर बेबी, टॉक्सिन फ्री फॉर योर फैमिली, केमिकल फ्री फॉर योर स्किन, इस तरह के फ्रेजेस आम तौर पे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। दीज आर नॉट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, दे आर क्लेवरली मेड ट्रिगर्स टू ट्रैप यू। एंड नो इंडियन मदर वांट्स टू गेट हर चाइल्ड समथिंग अनसेफ, शी वांट्स टू पे मोर बिकॉज शी वांट्स हर चाइल्ड सेफ, पर उसको बेवकूफ बना दिया आपने। ये केवल मार्केटिंग नहीं है, मैनिपुलेशन है। आप कहते हैं जी केमिकल फ्री, हर प्रोडक्ट में केमिकल्स हैं, ठीक है, कुछ आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट वेस्ट हैं उनमें हो सकता है वो केमिकल कम हो, परंतु जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें तो केमिकल हैं ही हैं। और साइंटिफिकली आप उसको टेस्ट करोगे तो आपको कोई ना कोई केमिकल तो मिलेगा ही। सेफ फॉर द बेबी ऑफन मीन्स नीड्स नो सर्टिफिकेशन, मतलब वो जब ये क्लेम करते हैं ना, किसी से उनको सर्टिफाई कराने की ज़रूरत नहीं होती है और ना इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे हमारे जैसे जो ग्रुप्स हैं छोटे मोटे, वो अगर टेस्ट करते भी हैं तो उनकी आवाज़ कितने लोगों तक पहुंचती है? हज़ारों, और वो बेच रहे हैं करोड़ों आइटम। तो ऐसे मामले में कंज्यूमर करे तो क्या करे? देखो, कानून में थोड़ा बहुत तो है कोई तरीका।
वो ये है कि आप कंज्यूमर कंप्लेंट डाल दीजिए। आप में से कितने लोगों ने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाली है? जरा हाथ खड़े करेंगे। कितने साल लगते हैं आपकी कंप्लेंट को? है जी, मतलब एक कंप्लेंट को डालने में 3 to 4 years। आपको सर, आपको, आपने हाथ खड़ा किया, कितने साल लगते हैं? हाँ, वो आउट ऑफ कोर्ट है, दैट्स आउट ऑफ कोर्ट। बट अगर आप एक्चुअली कोर्ट में चले जाओ, जो मैं बता रहा हूँ कंज्यूमर कमीशन में, तो दिल्ली में 11 कचहरियां हैं। किसी कचहरी में 3 से 4 साल से कम आपका कोर्ट का फैसला नहीं आएगा। अब बताइए, आप में से कौन है जो किसी फॉल्स एडवर्टाइजिंग पे कंप्लेंट डालने को तैयार है? कोई है? नहीं है। क्यों नहीं है? कि भाई आप अपने जेब से पैसा खर्च के उसको ड्राफ्ट करोगे, उसको फाइल करवाओगे, फिर जब तारीख पड़ेगी आप जाओगे, फिर कंपनी का वकील आएगा, उससे जिरह करोगे, फिर 3 साल बाद आपका फैसला आएगा, आप जीत गए तो कंपनी ने अपील कर देनी है, फिर आप 3 साल 4 साल और स्टेट कमीशन जाइए। कोई कर सकता है ये? कोई? मैंने कई लोग देखे, हम भी बेवकूफ़ थे जब ये नया नया कानून आया था, हमने मुकदमे डाल दिए। एक मुकदमा तो हमने 20 साल लड़ा, 20 साल। फिर बाद में समझ में आया कि भाई ये ठीक रास्ता नहीं है। ये तो तभी आप करो जब आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा हो, जो आपने पैसा रिकवर करना हो। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के खिलाफ आप केस डालोगे तो आपको क्या मिलेगा? कुछ है? वही ना, तो मैं तो तभी कह रहा हूँ कि प्रूफ होने के बाद 3 साल की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं होगा प्रूफ तो हो सकता है जल्दी केस डिसमिस ही हो जाए आपका। मेरा ये कहना ये है कि ये काम आसान नहीं है, जो ये कानूनी दांवपेच हैं। फिर आप सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उसके अगेंस्ट उसमें कंप्लेन कर सकते हो। सेक्शन 20 और 21 में उसके पास अथॉरिटी है कि भाई वो करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। ग्रीन वॉशिंग, उन्होंने गाइडलाइन इशू करी हुई है कि एडवर्टीजमेंट्स में ये क्लेम होंगे तो उसको ग्रीन वॉशिंग माना जाएगा। और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ जो वो उनकी रेगुलेशन है, उसमें सेक्शन 21 में वो कार्रवाई कर सकते हैं। और सेक्शन 88 में अगर कोई डायरेक्शन दी जाए तो और वायलेट हो तो 6 महीने की कैद और 20 लाख तक का जुर्माना है। और सेक्शन 89 में भी 2 साल तक की कैद और 10 लाख तक का जुर्माना है और 50 लाख तक जा सकता है। परंतु इसकी कहानी और है। दिल्ली में 11 कचहरियाँ हैं, हर स्टेट में कचहरियाँ हैं, 550 से ऊपर कचहरियाँ हैं हिंदुस्तान में कंज्यूमर कोर्ट्स। CCPA जो बॉडी है उसके दफ्तर होने चाहिए थे, उसके फुल टाइम ऑफिशियल्स होने चाहिए थे, कोई नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि भाई जॉइंट सेक्रेटरी को कमिश्नर बना दिया है, एडिशनल सेक्रेटरी को चीफ कमिश्नर बना दिया है। उस बेचारे के पास 20 आइटम रेगुलर सरकारी बिजनेस के हैं, ये आइटम नंबर 21वां है। तो क्या पूरे हिंदुस्तान में वो ये सब रोक लेगा? ये आप सोच के मुझे बताओ। यही हो रहा है। तो CCPA में कानून में तो है, परंतु जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए CCPA के पास, वो हिंदुस्तान भर में मिसलीडिंग एड्स को रोकने के लिए बिल्कुल ना पर्याप्त नहीं। और हमने कई बार गुजारिश करी है कि आप बनाइए इसको, फुल टाइम कमिश्नर बनाइए, ताकि जो लोग नहीं जा रहे हैं मिसलीडिंग एड्स के खिलाफ कोर्ट में, आप डायरेक्टली कार्रवाई कर सकते हैं। आप करिए, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से। और मैं आपको ये बता दूं कि हम मैडम तो कई सालों से कर रही हैं, परंतु जब मैडम जॉइंट सेक्रेटरी बनी थी, कौन से साल में बनी थी आप? 2003। हम 1983 से 2003 तक पहले से काम कर रहे थे। तो कितने साल हो गए? 17 और 3 20 साल। आज हमारा 44वां साल है। जब मैं यंग एक लेक्चरर था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो इसको हमने सेटअप किया था। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। और अब हमारे दूसरे लोग हैं, जनरेशन है, अभिजीत बोस जी बैठे हैं यहाँ, जो हमारे नए चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। इनका ऑफिस है लाजपत नगर में। ये हम तो वॉलंटियर हैं, ये लोग फुल टाइम काम करते हैं। तो अगर किसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन में कुछ गाइडेंस लेनी हो या कुछ, हमारा एक लीगल डेस्क भी है जो फ्री लीगल एडवाइस देता है। यू आर वेलकम टू कॉन्टैक्ट ऑन द वेबसाइट और इन द ऑफिस। तो ये कह के मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। सवाल बाद में। थैंक यू सर फॉर एनलाइटनिंग द ऑडियंस अपार्ट फ्रॉम ओपनिंग द टॉक। और खन्ना जी ने आपको, प्रोफेसर खन्ना जी ने आपको, जो हमारा प्रोमिसरी नोट होता है ना महात्मा गांधी जी की, अगर नज़र से आप देखें
कि मनी का क्या क्या दायरा है वो समझाने की कोशिश करी है। और दूसरा जो सरकारी तंत्र में ये भी रहे हैं, डॉक्टर साहब भी रहे हैं, हम भी रहे हैं, आप में से भी कई रहे हैं, उस सरकारी तंत्र में आप उसको कैसे झेलते हैं दोज मनी मैटर्स को, उसको कोलेट करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच एंड आई थिंक विल टेक द क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ इनिशियल प्रेजेंटेशंस। माय प्रेजेंटेशन इज नेक्स्ट। इसमें एक फाइल है ना, ग्रीन वॉशिंग की स्टार्ट है, वो लगा देना। So, as usual, welcome and our main purpose of doing these programs is to empower you all. उसमें हाँ राइट, नहीं पीपीटी होगा, ना डीआर में चलो, इसमें फोल्डर नहीं फाइल होगी, हाँ ये इसमें यू कैन सी, हाँ राइट एक ही है प्रेजेंटर। सो हमारा पर्पज़ ये रहता है कि हम ऑडियंस को एम्पावर करें। जो एम्पावर करते हैं वो नॉलेज के दे के ही कर सकते हैं, शेयर करके ही कर सकते हैं। एंड आवर पर्पज़ इज़ टू एम्पावर यू बाय sharing the knowledge as we know or as it exists. We generally, if we take the cases, we take them as an example. So let us see what we know about these cases. I think the story starts from, आप लोग होटल में रहते हैं, गेस्ट हाउस में रहते हैं, तो आजकल पिछले मैं तो जब से देख रहा हूँ ये है कि आपको टॉवल जो है ये बहुत एनवायरनमेंट पोल्यूशन करता है। इसको अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप अलग से ऊपर रख दीजिए, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो नीचे फ्लोर पे डाल दीजिए। इट्स अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑल ओवर द ग्लोब। तो न्यूयॉर्क में एक सर्जन थे, डॉक्टर जे, ही वॉज ए एनवायरमेंटलिस्ट। सो ही सॉ द सेम थिंग। इससे ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, मतलब एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, बट लेट मी फाइंड आउट। जितने बड़े बड़े होटल्स में वो गए, जिनकी इंक्वायरी करी, उसमें देखा कि एक्सेप्ट कि टॉवल की जो रीयूज़ है उसके अलावा कहीं पे उनका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कंट्रीब्यूशन नहीं था। न पैसे से, न एफर्ट से, न मैन पावर से, न कोई चीज़ वो बेचते हैं खरीदते हैं उससे। Then he also saw it probably saving more money to them by not cleaning all the laundry. They don't have to wash it and wash it again. And what he realized was all this was being done in the name of the environment. Environment protect करेगा अगर आप डिटर्जेंट यूज़ नहीं करेंगे। उन दिनों एनवायरनमेंट की बड़ी कहानी थी, 1986 की ये कहानी है, 85 में उन्होंने शुरू करा होगा। So 86 में he gave this term called greenwashing, washing of the towels using the greenery of the environment. And this caught on in these kind of forum, जैसे civil society के होते हैं, NGO के होते हैं, and it went to such an extent, though it took time, 72 से 1992 में जो अगली यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई थी उसमें ये मुद्दा बन गया। और जो ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशन थी यूएस की और बाकी सब थी वो उधर आई थी, एंड द कॉर्पोरेट फेल्ट लिटिल थ्रेटन्ड। इफ़ यू लुक एट द यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग, ये 92 की जो मीटिंग हुई थी ये रियो द जेनेरो में हुई थी, जिसको कि अर्थ समिट के नाम से जानते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा कॉर्पोरेट की अटेंडेंस थी, बिकॉज दे वांटेड टू सेफ गार्ड इट। एंड व्हाट यू विल हैव टू सी फ्रॉम द हिस्ट्री is whether they have succeeded in safeguarding or whether the NGOs have succeeded in bringing the truth out. It's a game that one never wins. But to open the subject, सीधी सी बात है, ये लेज में और ये जितने चिप्स आते थे, and many of these package items I would see here, they will write 0 cholesterol. They are not writing a wrong thing. They are not deceiving anyone. They are writing a truth. And they are writing a truth क्योंकि जो कोलेस्ट्रॉल है वो वेजिटेरियन किंगडम में एग्जिस्ट ही नहीं करता है।
इट्स लाइक थिंग यार मेरे आलू में चिकन नहीं है, अरे भाई हो ही नहीं सकता हैगा. बट यू विल सी दैट ऑल दीज थिंग्स आर क्लेम्ड. वाई आर दे क्लेमिंग इट? बिकॉज हम लोग, डॉक्टर लोग, वो कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, आपका हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन का स्ट्रोक हो जाएगा, किडनी भी खराब हो जाएगा, इधर सब कुछ हो जाएगा. वी आर स्केयर्ड ऑफ कोलेस्ट्रॉल and they are using that to do the laundry washing. And when you do greenwashing in health matters, then health plus greenwashing becomes health washing. So this is a classic example of health washing. But same चीज में आप दूसरा भी देखेंगे. अब कोका कोला के nowhere gone, sweetness from natural sources. ये तो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना. अगर वो सुन भी रहे होंगे, जैसे कि सुन रहे होंगे, फर्स्ट थिंग दे विल डू इज दे कैच मी लीगली. व्हाई विल दे कैच मी? आई से व्हाट इज दिस स्वीटनेस फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, लो कैलोरीज. जो स्वीटनर्स नेचुरल सोर्सेज में आते हैं, शुगर हो, फ्रक्टोज हो, ग्लूकोज हो, जो भी हो, सबका कैलोरी कंटेंट एक ही होता है. और आप यू कैन नॉट क्रिएट ए जीरो कैलोरी कोक बाय नॉट एडिंग ए स्वीटनर. एंड दिस नेचुरल वर्ड यू विल सी टाइम एंड अगेन. The problem with the word natural is कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है. जो सोसाइटी, जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है, उसमें अगर कोई पॉइजन भी एग्जिस्ट करता है, वो भी तो नेचुरल है. हमारे देश में जो पॉइजनिंग करके, सुसाइडल पॉइजनिंग से जो डेथ होती है, ज़्यादातर उसमें नेचुरल पॉइजन ही होती हैं, यूज़ होती हैं. गाँव में वही मिलती है. तो नेचुरल इज़ ए वेरी स्केरी वर्ड, बट इट इज़ ए वेरी एंटाइसिंग वर्ड. सो आपको जहाँ नेचुरल मिलेगा, वहाँ पे आपको लगता है ये नेचुरल है, ये कुदरती है, ये इंसान का बनाया हुआ. जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, वो सिंथेटिक नहीं है. सारी मेडिसिन आज की तारीख में सिंथेटिक है, कोई नेचुरल नहीं रह गई है. बट आयुर्वेदा में somebody said it कि आयुर्वेदा में you compare it, they are not synthetic, they are natural. Whether they are natural from the plant kingdom or minerals or animals is a different order. So the core concept is, what you are trying to do is, greenwashing is a practice which is deceptive practice. It is not saying untrue things, it is not saying misleading things in not the true sense, but they are trying to deceive you, natural use करके. Involves false, vague, and that's why content writing becomes very important. जो words वो use करेंगे, वो ऐसे precise नहीं होंगे. I like that example of, जो डॉक्टर खन्ना ने दी इसकी इंश्योरेंस की, कि जो स्मॉल वर्ड है, स्मॉल प्रिंट, उसको कौन देखता है. इसमें भी वही स्मॉल प्रिंट है, कि जो स्मॉल प्रिंट वो लिखते हैं नेचुरल का या और वेग वर्ड्स का, उसका कोई तोड़ आपको कोर्ट कचहरी में नहीं मिलेगा. जे वेस्टरवर्ल्ड 1986, वी हैव टॉक्ड अबाउट इट. तो ये क्या नई चीज़ है कि 86 में हुई? ये कि पहले भी होती थी. ये ऐड जो है ये 1952 का है. आई पिक्ड इट आउट फ्रॉम द इंटरनेट, परसिल का 1952 का ऐड है. ये वही कहता है, उसकी कमीज़ मेरी कमीज़ से ज़्यादा सफ़ेद क्यों? क्योंकि वो परसिल यूज़ करता है. क्या ये ग्रीन वॉशिंग था उस समय, या कॉम्पिटिटिव होती पॉलिसी? 52 में कोई ग्रीन वॉशिंग नहीं था. इन द सेंस वी डिडंट नो द कॉन्सेप्ट, दो इट एग्जिस्टेड, बट वी डिडंट नो इट, वी डिडंट रियलाइज इट. द सेम गाइज जो ये यूनिलीवर की कंपनी है, ये लोग अब जो है 2023 में जो ऐड दे रहे हैं, उसमें यूरोप के बैकग्राउंड के स्नो क्लैड माउंटेन्स और ग्रीनरी सब दिखाते हैं कि वो सफ़ेदी आपको इससे आएगी. आउटस्टैंडिंग स्टेन रिमूवल. So this has changed the scenario. But what has also changed is many stories. But I'll just take a minute to tell you about a couple of them, one or two of them, जिससे कि काफ़ी केस बन गया है. ये है Volkswagen की. They came out with a fuel, this डीजल. उस समय डीजल ही चलते थे ज़्यादा. उन्होंने कहा कि ये जो डीजल है हमारा, ये इतना एनवायरनमेंट फ्रेंडली है कि वी कॉल इट द सेफेस्ट.
How did they make the diesel so safe? I think it was 2015. They made it safest by putting a device called defeat device. Just read the top line. What was device doing? Defeat device ऐसी थी कि जब उसकी चेकिंग होती थी ना, इसकी कितना पोल्यूशन है, पीयूसी जो चेक होता है हमारे यहाँ, तो पीयूसी जब चेक होता था, then it used to switch that cycle, और जितनी पोल्यूशन वो करता था उसका 40th हिस्सा 2.5% वो दिखाता था. It would always pass the test with flying colors because जितना वो दिखाता था उससे 40 टाइम्स ज़्यादा वो पोल्यूट कर रहा था. और ये सिर्फ जर्मनी में नहीं कर रहा था, ये यूएस में भी कर रहा था. थैंकफुली इंडिया में नहीं कर रहा था बिकॉज वी वर नॉट इनटू एनी ऑफ दोस कार्स, बट इट वाज स्प्रेड ऑल ओवर. 40 times the legal limit. So this is how they came up. But when it came to these civil societies and they took up the case, they had to bear in fines $30 billion. Look at the thing that we are talking about. We are not talking about Lay's chips alone, but we are talking about a larger chunk, which could again be running into billions. Legal cost was another $2.8 billion in US. The corporate repercussions were huge. The stock prices, and Dr. Khanna is the right person, having been the dean of the Delhi School of Economics, to talk of those, कि कैसे stock price नीचे आए, कैसे image नीचे आया. लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता इन अच्छी बड़ी कंपनियों को लगती है कब उनकी इमेज नीचे जाती है. And they took 6 years from 2015 to 2021 to revive that image. Even UN had barred them from these kind of activities. This is one example. The other is the example which you will see all these brands that you are seeing here, H&M, they were not there in 2011 when they introduced this brand called Conscious Collection. What is Conscious Collection? What they introduced that time, you will see it every day. आप इसमें H&M के पास जाइए, आप Marks and Spencer के पास जाइए, 50% recycled. Decathlon also will write 50% recycled polyester. Now they were making that claim in 2011 that 96%, 89%, 86% are all recycled. They were not only making recycled, they were also saying that 50% is from sustained sources which could be organic, which could be natural. और ऐसा नहीं था. They also had to go through this, penalty and suffer. But then, such is the case. Cosmetics were talked about. Shein is another company, which is a $100 billion company. $100 billion company was coming out with, they had this fashion summit that is done. It was done in Denmark, which is the place of this company. So what they did, they announced there that we will do a sustainability project. I think they did it in Guatemala. Uska cost था $15 million, which is 0.0001% of the evaluation of the company, which is 0.1% of the revenue that they earn every day. So, whereas these are the guys, big ones, they bring in a lot of damage to the environment. The point is, जिस environment को हम protect करने की बात कर रहे हैं और जिसमें हम society भी involve हो चुके हैं, individuals भी involve हो चुके हैं, उसको protect करने के लिए जो होता है, उसमें हम उसकी emotions के साथ खेलते हैं. भाई आप मेरा T-shirt पहनिए, मेरा coat पहनिए, तो आप environment को protect कर रहे हैं because it is coming from those sources. That is the idea. आज की तारीख में lithium is the most talked about element. Electric vehicles and all those electric cells. और mineral जो small elements में क्या कहते हैं वो ट्रम्प साहब ढूंढ रहे हैं, उनको नहीं मिल रहा है, चाइना से लाते हैं. Rare earth metals. Lithium is number 1. Lithium का triangle जो आता है उसमें बोलीविया, अर्जेंटीना और चिले आती हैं. आज की तारीख में घूमने के लिए बड़ी अच्छी जगह है. आज की तारीख में नहीं, मैं कहूँगा लास्ट वीक, क्योंकि बोलीविया में अभी इमरजेंसी लग गई है. बट दे आर ब्यूटीफुल प्लेसेस.
Now they knew that they have these flat, lakes में उनकी lithium के वो हैं जिससे वो lithium को आप extract कर सकते हैं। जो वो extract करते हैं उसमें काफ़ी डैमेज होती है, जैसे हमारे कपड़ों में होती है, जीन्स में भी होती है, वाटर पोल्यूट होता है। Their water sources are getting, lakes are getting polluted. If they are getting polluted, the local population is suffering. Not only local population is suffering, it is also the tourists who are suffering. They would not want to come. And it's a question of not only is it causing the damage to the environment, it is also causing damage to the diversity and their tourists, whether it would sustain or not. So look at the larger picture, but none of them has actually gone away. Okay, so another just another 1 or 2 points I'll make is, organic has been talked about so much. There is no definition of organic, neither in India nor in America. You can call it 100% organic, all organic, or organic because it has 100 components or 10 components, one is organic. So we call the whole thing as organic. You mix two oils, olive oil, mustard oil, you can mix 1/3 of the mustard oil to organic olive oil and still go ahead and call it organic. So there are many of those things that are being talked about. I would not like to say more because organic has become the real money churner. And the food market is growing, and it's not only the organic foods, the nutraceuticals and supplements. And I will come now just last slides on health washing. So we said health washing is, how did health washing started actually? This was 1986, so 2000 health washing started when there was these, diets coming in. So if you go to these developed countries, they'll send you a weekly diet. वो बॉक्स में आती है वीकली, आपका 10 किलो वजन कम करना है, 20 किलो वजन कम करना है, उसके लिए तो वो सब आता है। उसके बाद उसमें देखा गया कि they are playing on it, and it was, as I said, health plus greenwashing became health washing. Okay, so all these things that you read, the ones that are highlighted in blue, should be the warning signals because they don't mean anything. These are the content writer's job. They write something which are so vague that you cannot catch anybody anywhere. So that is something that you should be worried about. And most of these things are based on labels. So greenwashing is environment, and here it is more of labels. Now let me give you some medical examples, which this probably would be. You have these shampoos that you use, shampoos and those liquid soaps, very, very popular in all these places. They have ingredients which slowly break down and release small amounts of free formaldehyde over time. And the idea of formaldehyde is, if you have seen this, formaldehyde में कोई भी चीज़ लगो तो sanitize हो जाती है वो, रूम का जो sanitation भी उसी से करते हैं रख के. Now this could be for killing bacteria, but it triggers dermatitis. आप में से कई लोग होंगे जिनको जानकारी होगी कि जो शैम्पू लगाते हैं वो कहते हैं मैं एलर्जिक हूँ. It is not allergic actually, it is more dermatitis from the toxicity. Sunscreen आते हैं, उसमें आप पढ़ेंगे एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन, कुछ ना कुछ होगा, because that is supposed to absorb the UV rays and dissipate them as a heat and don't let it get into the body. But these by themselves, both these chemicals, whichever one they are using, undergo photooxidation. When you are in the sun, which is the light, greatest light, वहाँ उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है. इट्स ए वेरी कॉमन थिंग. एनीथिंग सिल्वर रखते हैं वो काली हो जाती है क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया, which reduces their efficacy, but then again it can cause allergic reactions. Skin lightening creams, they contain some chemicals which again convert when they come in contact with the skin. Skin has got a whole lot of ingredients and the things that get secreted from the skin, and this arbutin could change into hydroquinone upon coming in contact with the skin enzymes. This
this conversion achieves the desired skin effect but can sometimes cause irritation or post-inflammatory pigmentation. So like perfume से होता है, you do it for good purpose, but we get these persons जहाँ पे वो use कर रहा है, आर्म पिट सारे black हो गए, क्या हुआ? बोला कुछ नहीं हुआ, तो कुछ करते थे, तो वो perfume का वो रह जाता है. So after effects are seen in some that you may or may not. And antioxidants we have talked about for many decades, many decades. Antioxidants in our body are good. Antioxidants in whatever is occurring in the natural environment also are good. But taking those oral antioxidants are no good. They don't make you healthier, they don't cure any of your diseases. Natural ones you take, that's okay. You're taking a fruit, that is okay. But the industry has so much of hold on it, everybody is willing to buy and take antioxidants, especially when they are sick. So I think I will stop here, but before I stop, this is what came out yesterday in the Times of India. FSSAI also is aware of it, and they talk about these misleading ads which are going in the domain of health washing, because FSSAI is not into greenwashing. And you can see the claims that are there and why it matters. So the practice is illegal, the use of words is vague, but catching them is difficult. So such claims as healthy, organics, maida. I was reading about one of your consumers things, mango juice marketed as no added sugar. They're not wrong. We have not added anything on top. Whatever ingredients came with it. But the ingredients included 50% as sugarcane juice. That's okay. But this happens all the time. Yeah, sugarcane is a natural process, na? This is FSSAI. So 100% natural is claim on instant noodles. Now tell me, how do you make natural paneer? आप कहीं पे भी देखेंगे natural पनीर. Unnatural पनीर क्या होता है? चाइना में जो बनता है. Because you can make from health claims by nutraceuticals, health claims by the whey proteins, herbal products. Here we are talking about health washing, the claims that they make. Okay, now anti-cancer products, poor fellow, what can you do when you low fat, gluten-free, immunity boosting, energizing, vegan, no added cholesterol. They are actually only misleading or playing on the emotions of the public. Now, the Consumer Protection Authority, when I looked at it, I was impressed. After the 7 roles they have given themselves, I was interested only in the first one, which I put the whole paragraph. The next ones I have just listed. It says right to safety, means right to be protected against marketing of goods and services which are hazardous to life and property. It is their job. It is not my job to go and fight. I'll fight only, as somebody said, first I'll collect the evidence and then I'll spend 4 years or 40 years. It's not my job. Their first the first dictate is right to safety. If that is done, then I think our job in the Consumers India will become more important and clear. I will stop here and request Dr. Jayashree ji to say a few words. आप इनका स्लाइड्स लगा दीजिए. वेट सर वेट मिनट. कोई बात नहीं, कहाँ जाएगा, बंद कर दो. Just see, there are some points on junks. Junk food पे कुछ points हैं अमिता के पास. मेरे बाद maybe दो, maybe 1 or 2. So, yeah. So I will try to skip things which have already been covered. We have a very powerful Consumer Protection Act now, 2019 it was passed, and
is in force since July 2020. And now it is theoretically, it is a shift from buyer beware to seller beware. But in practice, it's not so. I'll skip all this. CCPA, the good news is that CCPA is in place and it has lots of powers. And it has issued, another good thing is that it has issued lots of guidelines from time to time, including guidelines on misleading advertisements, on celebrities, they should do due diligence, surrogate advertising is banned, there are guidelines on greenwashing, there are endorsement know-hows for celebrities, there are additional influencer guidelines for health and wellness, celebrities, influencers, and virtual influencers. But have you ever seen a celebrity being penalized? These are the powers vested in them. That first time, penalty up to 10 lakh, first offense, and prohibit making endorsement for a period up to 1 year. Second or subsequent offenses, penalty up to 50 lakh, and prohibit making endorsement for a period up to 3 years. Has anyone seen our big stars being penalized? Maybe some starlets have been, small fries, we haven't had, we don't hear their names. For example, we see this print ad very often, Kareena Kapoor saying nutrition in every sip. But as per our study, it's full of sugar, preservatives, etc. Not at all a source of nutrition. It comes in the category of junk food. Amitabh Bachchan saying, Nutrilite by Amway, ऊर्जावान भाव, खुद को प्लस लाइफ का आशीर्वाद. Very nice. Another ad, another celebrity, same product. Best of nature, best of science. But what does it have? One bottle costs more than 2,000 rupees. I'm just giving you an example of one ingredient in this, that is calcium. So Nutrilite has 200 mg of calcium, but our body needs 600 mg of calcium every day. And if we take a plain glass of milk, a small glass, 250 ml, we get around 500 mg of calcium. Even a single banana, modest banana, kela khalo, 364 mg of calcium. Should you be spending over 2,000 rupees for such products? So they are all examples of health washing. Some more examples. Superfoods. This is, people highlight millet cookies, ragi chips, but actually millet maybe 5% in the entire product, but they show it like this. Maggi with spinach. How much spinach? 1.2% of dehydrated spinach. So this was an ad which was coming in COVID times. Our superstar advertising saying protection against COVID with 2 spoons of Chyawanprash. So some people complained, and then our own intern, Navya Jindal, as one of the internship assignments, we asked them to report a misleading ad. And she reported this ad, and ASCII asked them to stop this ad, and it was stopped. It was a win. They changed the ad to the second one. But lo and behold, after 1 month or so,
Again, the ad appeared again. So these are just few examples. Even reality of green home. 5-star appliances are being advertised as, green home. So while they do reduce our electricity bill, but that is actually, the more gadgets you have, even if they are 5-star, they are actually electronic waste. They generate lots of electronic waste, which is not at all green. So the good news is that recently, only yesterday or day before, FSSAI was in news that they have issued notices for misleading healthy claims. And then today again, CCPA was in news that they have imposed penalty of 1 lakh on some company for health washing. So these are good examples. But I'll just give you this one example of ORS. Lots of, beverages, they were claiming ORS, ORSL. They were misleading consumers by branding ordinary drinks which were far from WHO formula for ORS, which is taken when you are dehydrated on doctor's recommendation. So they were misleading consumers by calling themselves ORS or ORSL or something like this. It caught attention of a pediatrician who said it's very wrong. I prescribe ORS and parents buy that beverage which is of no use. But how much time it took to actually be enforced? It took 10 years. Pediatricians fight for 10 years. Imagine. So it's good that FSSAI has issued notice on 15th June, but we don't know how much time it will actually take for things to stop, things to change. Shocking revelations by ASCI's Advertising Standards Council of India. So lots of misleading complaints are made to them. So they did a study which revealed that 79% of green claims are misleading. And 56% of investigated healthcare ads are misleading. And 69% of social media influencers fail to comply with basic disclosure norms. So we have norms, we have rules, we have laws, but when it comes to compliance, that's very low. Another shocking revelation that it's from Statistica 2023, based on more than 8,000 respondents, that 20% of the respondents incurred financial as well as health losses because of misleading claims in advertisements. So it's a real loss. 20% is not a small loss. Central Consumer Protection Authority, very empowered, but actually, as everyone has said, they are yet to rise to our expectations. Yes, they have imposed some penalties. They imposed 10 lakh penalty on Sensodyne for misleading claims. They've been imposing penalties on coaching institutions for their misleading claims. And many more, but such cases are far and few, and they are not able to have exemplary effect. Just one example of misleading ad in USA. It's a bit old example, but it's still relevant. Reebok shoe made a claim, their particular shoe brand, better legs and better butt with each step. They were asked to substantiate, which they could not. And then $25 million
penalty was imposed on them. So this is the kind of penalty which has a real deterring effect on others also. What happened in India, कोई सरफिरा कंज्यूमर उसने मिसलीडिंग एड के अगेंस्ट कोर्ट में चला गया बेंगलोर में. उसने हीरो होंडा खरीदी जो क्लेम करती थी 80 किलोमीटर चलेगी 1 लीटर में, लेकिन नेचुरली वो बहुत कम चलती थी, तो वो कोर्ट में चला गया. 10 साल डिस्ट्रिक्ट कमीशन में लड़ा, स्टेट कमीशन में लगा. कहाँ बेंगलोर में रहता था, नेशनल कमीशन दिल्ली में है, दिल्ली तक लड़ा. 10 साल के बाद उसको मिला क्या, 25,000 रुपये कॉम्पेंसेशन, 25,000. Our act provides power to issue corrective advertisement. Full page ad which is misleading. So consumer commissions can order them to issue a corrective ad of the same size, same prominence. यदि 50 लाख पहले ad में लगाया है जो misleading है, तो दूसरे ad में भी 50 लाख ही लगने चाहिए. लेकिन ये power, CCPA also has that power. But we have never seen that power being used. So you are all familiar with Patanjali case. Supreme Court had taken them to task. But what happened finally? Do you know? Let me quickly take you to conclusion. Supreme Court appointed amicus curiae on 9th July 25 to monitor this case. So what was his report? He said that Ramdev is not cooperating with the criminal trial. The case was adjourned on 5 of the 7 dates due to the absence of the accused, that is Ramdev. On 2 occasions, even the presiding judge was on leave. Final outcome, the Uttarakhand High Court dismissed the complaint on technical grounds. So who can touch such people? Even Supreme Court उसका बाल बांका नहीं कर पाया. So our CCPA was competent to impose penalty on misleading ads of the type, Supreme Court had taken cognizance. But it was silent because they also don't want to, pollute their track record. So what should we do as consumers? Prevention is better. कोई कुछ करने वाला नहीं है. We have very poor enforcement. So be an enlightened consumer. Make well-informed decisions. Think 10 times. Read the label. Know, research. Dr. Google is there. ChatGPT is there. Gemini Plus is there. Your friends are there. Doctors are there. Check with them whether this product should be used or not used. Don't just make impulsive decisions that this ad is very beautiful or this star is very beautiful who is endorsing the product. Therefore, you will get size 0 like Kareena Kapoor. We should go for it. Please don't do that. And if at all you can, don't go to court, but we have National Consumer Helpline. There also you can report a misleading ad. And you can also report to ASCII. So just 1 or 2 examples that there is craze for looking younger and looking beautiful. And for that, many people go for cosmetic surgery. But there have been many cases of, things going wrong, even some deaths happening. Why? Because cosmetic surgery should be done by a person who is a surgeon,
who is a dermatologist, who is a plastic surgeon, but it's being done at many places in many beauty parlors by technicians. So it's going to even hair transplant. You feel that, your hair dye, natural, it's really natural, henna, natural, etc., nothing natural about it. Perfume, whether it's tobacco or perfume, same synthetic chemicals are used. Only the smell is different. Chemicals are the same. So please understand the product and then buy it. Our study showed every organic product, or we have craze for organic, and we are ready to pay 2-3 times more for organic. But the market is full of fraud, and our study showed that more than half the people don't know what to check. They don't know what is Javik Bharat logo. We should be there on every organic product, packaged product. So few things. So after you know your consumer rights, you will be strong. So miles to go, but keep going. Thank you. Thank you, Dr. Jayashree, for bringing in this hope. Main. She is always very, you. No, I'm done. So she is bringing this hope that things are there. They may not be perfect, but they are coming in. Central Consumer Protection Authority came in, and also that it is getting stronger and stronger since 2019 when it came up. And there are ways that you can do it. So perfection is not there, but knowledge that something is there and you must exploit. And actually, I would also agree that if you look into our country, howsoever bad it may be, even if they don't if they give a fine of 25,000 after 10 years for a claim of 80-kilometer mileage, howsoever bad it may be, but the first thing is to lodge a complaint. It used to be easy earlier on when you could write it on a postcard. It is even easier today, you can write it on an email. You might think that it is going down the black hole, but believe me, it does not go down the black hole all the time. More than half of them are given due respect. So I think with this, we would open the subject to the audience, and while audience is preparing, no? Okay, so please come up with your opinion, questions, query, contribution, whatever you want to make on this subject of greenwashing, health washing. Identify yourself, stick to the topic, and keep it brief so that others can ask. I would collate the initial few comments, and then we will take them up with the panelists. Yes, sir. I have two quick questions. My name is Avijit Bose. I represent Consumer Voice. One is on the sunscreens, Dr. Gupta, you said that there are few elements in the sunscreens which are photosensitive. Isn't it contradicting the basic thought of sunscreens? Okay. No, you go ahead. We'll take all these later. We will answer it. No problem. But not one by one. We'll take 5, 6 of them. That's my first one. The Yeah. second one is when you said just now that it is never going into black hole always. It's my personal experience. I've been, cheated. I would call fraud. It's not mis-selling. When I was residing somewhere outside India and I came back to renew my ATM card, and I was told by the officer that please, do a fixed deposit, which will be good for me in terms of, my targets. And I asked him time and again that is it a insurance product or a fixed deposit? He said continuously that's a fixed deposit, FDI. Later, when I got the certificate, it turned out to be an insurance product. I took the matter up with the grievance cell of HDFC Bank,
Again, it was a HDFC case. They came back to me after a month saying that it was not a mis-selling. The officer informed you. So I wrote him back that it's a fraud. I never called it mis-selling. It's not relating to this topic. Please ask questions only. So it is not a question, ma'am. I'm just Comment. saying that it is, it's not a hopeless Okay, situation. just summarize so it I so got, that I got a reply from the IRDA and the money was returned back. So it is very important to understand that we can act and we get results. Thank you. Good, very positive. Sir, in that corner. This is regarding the. You're, My name is M.B. Chandra. I work for media. This question is regarding your this organic. You are saying these organic products are not correct or not. What is the correct definition of organic? You let us know also that. And regarding vegan also. And what is the correct definition of vegan? And the second is, in the introduction, it was told that the Hemophilia Institute you set up was the world's best. Whether it is still best or it was best. okay. Sir, you want to ask something? Yeah, no. I have a question. Sir. Mic here? Here, this. Okay, yeah, please go ahead. Yes, thank you. So after those wonderful presentations, I just have an observation. And one is that our country has two kinds of people, the haves and the have-nots. And I think, when it comes to consumer education, we have failed miserably in terms of educating people, about how to protect their rights. Now, the second thing that I want to say is that, the people today, because we are living in an age of social media, posting pictures and things, people are looking for quick results. And we talked a lot about cosmetics and, these days like weight loss. So Ozempic and Mounjaro are the most highest selling drugs. So people themselves are looking for quick results and sometimes they feel, dekhi jayegi jo hoga, let us use it now. So I think that is also making things difficult. Yeah. Sir. From your slide, I want to ask is electoral perfect? Is? Electoral powder. Is electoral. What did you say your name was? Sorry. Electoral perfect. Okay. I'm Sunil Gupta. And Okay. secondly, if I may ask from the brand name, is the Khadi Cosmetics and Fab India Cosmetics, are they what they claim? Very good question. Okay. So let's take, sir, you want to ask something, add something? Anybody else? So I think Mr. Bose, yes? Anyone? Sir, I have a simple question. Yeah, Yes, sir. please, My please, name is sir. Atif Rahmani. Sir, I am deeply concerned about few products which are into widely circulation in market, especially chocolates, cheese, gelatin, and all the products which are made out of these ingredients. And in the recent past, all the companies, most of the companies which were famous for producing spicy snacks, especially chips and mixtures, they have started adding sugar to that. And it is hardly mentioned on the packaging. And when we will get more clear policies for mentioning the ingredients of the product clearly, because we have just mentioned acidity regulator, INS2, INS3, whatever may be the code, we as a consumer are not aware that what exactly that ingredient is having. Okay, so let's start with Mr. Bose. Photosensitive. Photosensitive does not mean that it is photosensitive in the heat, that photosensitivity. Photosensitivity can damage the skin, can damage many parts of the body. That is not sensitivity, that is a direct damage from the ultraviolet rays. That is why you want to use it. And it is supposed to take those ultraviolet rays and dissipate them. It does not get into the body, it reflects them off as heat. But what I was talking about is those etoquinone, the chemicals that are there, they get oxidized. Like you would have seen when Delhi was very hot couple of days back, couple of weeks back, the nitrogenous compounds were getting oxidized into ozone.
one might say, where is nitrogen, where is ozone? But they get converted into ozone, and ozone at ground level is very bad, especially for the children. And this report came up that now you have these sensors everywhere that the ozone levels were very high during those 2 weeks. So we were not meaning the sensitivity in terms of allergy, we are meaning in terms of oxidation that causes the damage. And the second question was, of course, that you were actually saying that if you file it, you might get your money back. Chandraji raised the question of organic definition. Sir, is there a definition for organic in India or in the world? ऐसा है, there is an international standard on organic certification, and that is approved by the Codex International. And under that standard, they have developed protocols that if a product has traceability, कि भाई आपने कौन से खेत से क्या चीज़ पैदा की और वो कैसे ट्रैवल करके मार्केट में पहुंची, उसकी ट्रेसेबिलिटी अगर होती है तो वो ऑर्गेनिक सर्टिफाई हो जाता है. और वो आसान काम नहीं है. यूरोप में, अमेरिका में तो ट्रेसेबिलिटी हो जाती है. अब आप सब्जी मंडी से सामान खरीदने जा रहे हो तो हाउ विल यू लोकेट इट कि भाई ये कौन से खेत से किस रूट से पहुंचा है. यहाँ हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए जो लोग क्लेम करते हैं ऑर्गेनिक, उनकी बात पे विश्वास कर ले तो ठीक है, नहीं करे तो नहीं. तो भी ठीक है. नहीं वो तो लेकिन जो जैविक भारत लोगो है FSSAI का, तो वो कुछ तो चेक करते होंगे. ऐसा है, उसकी स्टडी करने की ज़रूरत है. मैंने तो करी नहीं है अभी तक. अच्छा, नहीं, उन्होंने ना एजेंसीज बना रखी हैं. आई थिंक वी हैव डन दिस टॉपिक हियर इन दिस कंज्यूमर्स फोरम ऑर्गेनिक, and we had shown the different types of Javik logos, and we had also shown the logos that you find in US or in other countries, and it is very difficult. I mean, just as Dr. Khanna is saying, you grow tomatoes, for example. Now, whether the soil was organic or not, and how many years do you want it to be organic? It's not that you just put in the synthetic fertilizers and then you say, okay, when I was sowing all this, then it was organic. I didn't do anything. The water that was coming in, whether it was coming, was also organic. So there are so many things, and if one of them is there, and if your law will say that is okay, so I think we can get into this. It's a more complex topic, but we have already covered it. So we'll go to the next one. Dr. Jayashree, haves and have-nots. We have this, 2 compartments. Weight loss drugs, quick results. Is there something that we can do for protecting rights? Observation, it was not a question. Yeah, no, but she raised a question of, is there some way we can protect their rights? We don't want that they fight in the court and get 25,000. Yeah? No, as I mentioned in my presentation, Professor Khanna mentioned anyways, that there are authorities, CCPA is supposed to take sumo to action. They are supposed to protect rights of our 140 crore people, save them from misleading advertisements, save them from unfair, unethical trade practices. How much they are able to do, that is for all of us to see. Okay. So unless and until they empower themselves, they use their powers. Similarly, consumer commissions which are there, in each and every district we have a consumer commission. But they are वो बेचारे बन के रहते हैं, कहीं एक कमरे से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं मेंबर्स नहीं है, कहीं प्रेसिडेंट्स नहीं है, कहीं उनके पास फंड्स नहीं है. हमने कहा whenever we visit them, we tell them आप जब तक ऐसे मरे मरे जजमेंट दोगे आप बेचारे ही बने रहोगे. पावरफुल जजमेंट दो, अपनी पावर्स को इस्तेमाल करो. You see your power. They have powers. यदि वो किसी कंपनी को कहें एक पेज का एड, करेक्टिव एड दो, तो सारी सुर्खियां आ जाएंगी और उनकी सारे एक कमरे से वो एक बड़ी बिल्डिंग में शिफ्ट कर लेंगी. Very soon. Here we are talking of a case where there may not be an ad, but people are going themselves to. No, and there are so many kinds of exploitation. So basically, we can only say that consumer organizations like us,
We are trying our best. And we have, in Consumers India, we have very active blog where we put all our studies, takeaways from such programs, etc., including some of the presentations. So please visit those. Consumer Voice. Professor Khanna has been working in this area for 4 decades, 5 decades. So comparative testing, which product is better, what is the best buy. So you have to make use of these things which are available. Yeah. Then FSSAI and Jago Grahak, Jago campaign, they're also doing much of it on social media. Anyone can subscribe to their, subscribe them, well, follow them on Twitter, etc. Follow them on Facebook, follow them on Twitter. So you will get wiser. Professor Khanna, would you like to add more, protecting the rights? हेलो, आई जस्ट वांट टू ऐड कि ये काम कोई आसान नहीं है. डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर नरेश, मैं, कई लोग काम कर रहे हैं. अल्टीमेटली हर कंज्यूमर को स्वयं समझना होगा कि मेरे इंटरेस्ट में क्या है, क्योंकि ये हम अपने इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं. हम ये कह रहे हैं कि भाई हर आदमी को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उतनी जानकारी और जागरूकता होनी चाहिए कि he or she should be able to protect their health, their financial interest, their well-being, themselves. आप ये सोचोगे कि भाई मेरे को FSSAI आके बचाएगी, मैंने कंप्लेंट कर दी, तो आप इंतजार करते रह जाओगे. आपको किसी की वेट नहीं करनी है, वो अपना काम करेंगे, करने दो उनको. परंतु यू हैव टू बी इंडिपेंडेंटली एबल टू डिफेंड योर ओन इंटरेस्ट. और आजकल तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे हैं, आप गूगल पे कर लो डीप इंटेलिजेंस वाली सर्च, सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी. आपको कोई डाउट हो तो दोबारा पूछो, 3 बार पूछो, यू विल गेट द फैक्ट्स. और अगर आपको डाउट है तो 3 लोगों से डिस्कस कर लो. तो ये तो पहले नहीं होता था ना. यू मे नॉट गेट डिटेल्ड प्रिसाइज साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, बट यू विल गेट इंडिकेटर्स कि भाई इधर जाने में फायदा है या इधर जाने में फायदा है. तो आप यू प्लीज find ways and means to collect the information that you need on your own. Don't wait for Dr. Gupta or me or Abhijit. आपको खुद ही करना है. हाँ, आपको प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो हम जैसे लोग बैठे हुए हैं. हमने तो दफ्तर खोला हुआ है लाजपत नगर में, सुबह से शाम वहाँ लोग बैठे हैं. तो अगर कोई आएगा तो उसकी जानकारी, उसको सलाह जरूर देंगे. बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. दैट इज द ओनली थिंग आई कैन से. बट ऑल्सो ये प्रॉब्लम है किन लोगों की, जिनके पास पैसा है. जिनके पास पैसा कम है, वो उनको बोलोगे ना तो बोलेंगे यार जी अभी छोड़ो जी, आप मुझे कंज्यूमर तो बनने दो, बाद में ग्रीन वॉशिंग देखूंगा मैं. उसके बाद पैसा ही नहीं है चीजें खरीदने के लिए, तो क्या उसके लिए ग्रीन वॉशिंग, हेल्थ वॉशिंग तो बेमानी है.